So, hello everyone. In this session of a faculty development program based on basics of Scilab, we will discuss about S Xcos. Okay. So, in Scilab, what is Xcos? It is a simulation platform where a researcher can model and simulate from simple to complex, continuous and discrete time systems and study the dynamic and steady state behavior of the model systems. So this Xcos offers a graphical approach using a block diagram editor for complex system modeling. So Xcos models are compiled in one run and simulated. Okay, so let us see how we can design our model and simulate it in Xcos. So for this we'll open our Scilab. So now Xcos open करने के there are three different ways. तीन तरीके से हम Xcos open कर सकते हैं. The first is we can type Xcos Xcos. If I enter, so a new window has been opened up. You can see. Okay, so this is one method. Then another method is in you go in application and we have this Xcos. So the second way you can open the Xcos, and there is another way. You just click this icon, which is also meant for to open the Xcos. Okay, so in either of the three ways, you can open the Xcos. So you can see over here, we have you can see we have palette browser in Xcos. So we have different palettes. Okay, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है. So we have two windows. One is called palette view and one is untitled Xcos. यहाँ पे हम इस particular area में we design our models and simulate them. इस particular area में हम models को design करते हैं, simulate करते हैं, और ये palettes हैं जहाँ पर we have predefined entities. These are called entities which you are seeing on your screen. तो सबसे पहले आप देखेंगे block. We have recently used blocks. कुछ ऐसे blocks हैं जो अगर आपने पहले यूज किया हो तो अगर आपने पहले एंटिटीज यूज किए तो यहाँ पर वो आपको दिखेंगी recently used or common entities. Then we have continuous time system entities. Then we have discontinuities. You can see different entities. Discrete time systems. Then lookup tables, mathematical operators like absolute value, log, minimum sign, maximum product, square root, and so on. Event handling, we have clock, sample, oscilloscope, and so on. Then matrix, palette browser, we have different entities. Okay, that are for matrix handling. Then we have electrical, domain, integer, port and subsystems, zero crossing detection, signal routing, signal processing, implicit annotations, sinks. So this is very important. I'll discuss and show you. Then we have sources. This is again very important palettes, thermohydraulics, demonstration blocks, and user defined functions.
So to begin with, if you see any one of them, suppose I say this, let me take any one block. Suppose I take this. Okay, suppose I take this. This is a demux block. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो we have this is input port and we have two output ports. Okay, so port which is and the end terminal which is towards inward is input port, and the terminal which is towards output is output port. Okay, so you can see different entities where you can have input ports, output port, on only input ports, on only output ports, and so on. So that depend upon an entity to entity. So see, this is one entity which has only output port. Okay, there is no input port. Then this is again another one which is only in output port. These are all in source. So let us build some small models and simulate them. तो हम लोग सबसे पहले एक हाफ एडर मॉडल सिमुलेट करेंगे और डिजाइन करेंगे, सिमुलेट करेंगे. तो हाफ एडर में क्या होता है, ये हाफ एडर. तो आप जानते हैं एक हाफ एडर एक डिजिटल सर्किट है जो दो बिट्स को ऐड करता है और एक सम जनरेट होता है और एक कैरी जनरेट होता है. ओके, सो वील डिजाइन दिस हाफ एडर. उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले टू कांस्टेंट सोर्सेस चाहिए. ओके, सो सोर्सेज में जाएंगे, सोर्सेज में है ये. so we'll go at sources. So sources, see, this is constant, so this is constant one input and this is constant second input. तो हमने दो कांस्टेंट सोर्सेज ले ली. तो एक कांस्टेंट सोर्स से एक बिट हम इनपुट कराएंगे, दूसरे से दूसरा इनपुट बिट. उसके बाद हमको एक लॉजिक ब्लॉक चाहिए, दो लॉजिक ब्लॉक चाहिए, एक एक्सक्लूसिव और की तरह और एक एंड की तरह. सो we go to integer. So we have this is the logic gate, logic output gate. Now, okay. Then what we need an oscilloscope. So again we'll go to sources. Sources should be in sync. Oscilloscope. So we go take this one oscilloscope. आपको कुछ नहीं करना है, ड्रैग करके ड्रॉप करना है. जो भी एंटिटी आपको चाहिए उसको आप माउस से ड्रैग करेंगे, ड्रॉप कर देंगे. और आप देखेंगे ये दो एंटिटीज हैं जो खाली which have only output ports. This has input and output ports. This has input port and input port. This is input port. One more we need. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये
इनपुट पुट है राइट से, तो यहाँ पे इसको क्लॉक से कनेक्ट करते हैं. So we again need a clock. So here we have a clock. तो ये सारी हमने ब्लॉक एंटिटीज जो चाहिए थी वो ले ली. अब इनको हम कनेक्ट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या है, इन एंटिटी को जब भी हम डबल क्लिक करेंगे तो पैरामीटर विंडो ओपन हो जाती है. इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं. ये 1 है तो इसको हम 0 कर सकते हैं. ओके करेंगे तो आप देखिए 0 हो गया. ओके, तो इनपुट कैन बी चेंज एज पर आवर रिक्वायरमेंट. अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है. इफ यू कैन सी नंबर ऑफ इनपुट्स टू एंड ऑपरेटर की जो वैल्यू है इट कैन बी फ्रॉम जीरो. ऊपर देखिए क्या लिखा है, 0 है तो एंड होगा. इसको हम 1 कर देंगे तो और हो जाएगा. ओके, सपोज आई मेक इट, तो सी, तो और गेट की तरह काम करेगा. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. सिमिलरली इसको 2 कर देंगे तो नैंड हो जाएगा. 3 कर देंगे तो नॉर हो जाएगा. 4 कर देंगे ये वैल्यू तो एक्सऑर हो जाएगा. तो हमको क्या चाहिए, एक हमको एंड गेट चाहिए. ओके, और इसको हम कॉपी करके एक और हमें चाहिए तो हमने एक और ले लेंगे. इसको हमें, तो दिस इज एंड गेट एंड दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्सऑर गेट. इसको नाउ विल 4. तो एक एक्सऑर गेट हो गया और एक एंड गेट हो गया. इसको डबल क्लिक करेंगे तो वी हैव इनपुट पोर्ट्स 1 and 1. ओके, तो वाई मिन वेक्टर मतलब जो मिनिमम वैल्यू जाएगी वो -1 एंड -5, तो इसको भी हम -1 कर देंगे. -1 और वाई मैक्स को भी 1 कर देंगे. ओके, इसको डबल क्लिक करेंगे तो वी हैव installation time should be 0 and period is 1. So that's okay. Okay, अब इसको कनेक्ट करते हैं. तो देखिए जो हाफ एडर को जब हम डिजाइन करते हैं तो जनरली क्या है, ये दोनों इनपुट्स एक्सऑर गेट में भी जाएंगे और एंड गेट में भी जाएंगे. तो हम इसको कनेक्ट करते हैं. आपको यहाँ माउस रखना है, धीरे धीरे इसको माउस को आगे ड्रैग करना है और ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा. तो एक कनेक्शन इसमें गया और वही कनेक्शन देखिए यहाँ से इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया. सिमिलरली ये जो आउटपुट है वो इसमें जाएगा और यहाँ से इसमें चला गया. ओके, तो ये दोनों कनेक्ट हो गए. उसके बाद जो ऑक्सिलोस्कोप है इसके 2 इनपुट पोर्ट्स हैं, तो एक एक्सऑर आउटपुट ऊपर वाले इसमें पोर्ट में कनेक्ट हो गया and this is connected to this. Okay, and this output will be connected to this. Okay, अब ये जो हमने कनेक्शंस किए that can be smoothened out or that can be adjusted. तो इसके लिए हमें क्या करना है, so you जस्ट उसको पूरा ड्रैग करना है, व्यू में जाना है, फिट डायग्राम
व्यू, तो देखिए थोड़ा ये बड़ा हो गया। देन इस पूरे को सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट में आप जाएंगे, लिंक स्टाइल में जाएंगे एंड ऑप्टिमल में क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए अपने आप ये कनेक्शंस स्मूथ हो जाएंगे। तो हमने ये छोटा सा मॉडल डिजाइन किया विच इज द हाफ हेडर। कैसे कनेक्ट किया, दो इनपुट्स हैं, डिजिटल इनपुट्स हैं जो एक्सओर में कनेक्ट है और एंड में कनेक्ट हो रहे हैं। सो अपर वन इज सम एंड लोअर वन इज कैरी। ये दोनों आउटपुट्स ऑक्सिलोस्कोप में कनेक्ट हो गए और ये क्लॉक से कनेक्ट हो गए। अब इसको रन करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, ऊपर देखेंगे डिफरेंट आइकन्स हैं, ये स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखेगा सिमुलेशन इन प्रोग्रेस। सो नाउ यू सी, ओके, देखिए रिजल्ट हमारे सामने है। देखिए ऊपर एक ग्राफ में आउटपुट आ रहा है 1 और नीचे वाले ग्राफ में आ रहा है 0। तो एंड गेट में क्या होता है, व्हेन आउटपुट इज 1 एंड 0, तो 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और वैल्यू 1 होती है और 1 और 0 की एंड वैल्यू 0 होती है। तो देखिए ऊपर वाला ग्राफ 1 है और नीचे वाला ग्राफ 0। इसको अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसको टाइप कर सकते हैं। तो 1 इज सम, सो ऊपर वाला सम है वैल्यू, और इसको डबल क्लिक करेंगे तो वी कैन राइट कैरी। ओके, नाउ इफ यू चेंज, अगर हम इसको वैल्यू को चेंज करें, नाउ वी आर गिविंग इनपुट 1 एंड 1। ओके, इसको फिर से हमने रन कराया, अगेन सिमुलेशन इन प्रोग्रेस and you see the difference. Now sum is 0 and carry is 1 because 1 and 1 exclusive or 1 is 0 and 1 and 1 is 1. So the sum is 0, carry is 1. Now you give reverse, इसको हम 0 इनपुट कर देंगे, अगेन इसको सिमुलेट कराएंगे, simulation in progress. Now again sum is 1 and carry is 0 and then we'll give 0 and 0. Okay, so फिर हम रन कर रहे हैं हमने simulation in progress and you see 0 and 0. So for 0, for both bits 0 and 0, we get sum 0 and carry 0. So this is how we design a small model half adder and simulated it in Xcos. So likewise you can draw a half adder. Okay, half adder करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक इन्वर्टर और लग जाएगा एंड से पहले। So we will have a half subtractor. Okay, so you can practice on your own. Let us take some more models to simulate. So suppose let us design a multiplexer. So to multiplex different signals. Okay, so let us open a new diagram.
So we should go to signal routing. So here we have demux. Okay, demux. We want a multiplexer. तो यहाँ से हम एक मल्टीप्लेक्सर ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्क स्पेस में इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रख दिया. इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे. Okay, then we'll take different kinds of signals. So we go to source library now. Okay, so we take the sinusoidal signal block, another one, because we want to multiplex 4 different signal. तो दो हमने ये one we take square wave, okay, and one we take a constant signal. So we took 4 different kinds of signals. Okay, then we need a clock. So we took a clock. Okay, then we need a oscilloscope and sinks. So here we need an oscilloscope, and also we need a clock. Okay, so now we will make connections in order to design a मॉडल. सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लेक्स में 2 इनपुट्स हैं, जिसको हम डबल क्लिक करेंगे एंड वी सी number of ports are 2, so we will convert it into 4. So you see now very easily, now we have 4 ports. इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फेज इज 0, दिस इज ओके. इसके फेज को हम 180 कर देंगे. ओके, क्लॉक का 3.1, इंस्टॉलेशन टाइम विल बी 0. इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया. एम्पलीट्यूड इज 1. ओके, इसमें 1 दे रहा है. नाउ विल मेक कनेक्शंस. इसको यहाँ से हमने ड्रैग किया और फर्स्ट पोर्ट से कनेक्ट कर दिया. इसको हमने माउस से ड्रैग किया, दूसरे पोर्ट से कनेक्ट कर दिया. तीसरे सोर्स को तीसरे पोर्ट से कनेक्ट कर दिया और चौथे सोर्स को
connect this. We connect this clock to this input. Configure this. It will be 0 and this is 1. Then we'll select the whole model. Go to format, line style and optimal. So the connections will be made smooth. Then we'll go to view, fit diagram and fit to screen. I will simulate this. Simulation in progress. And you see we have different graphs, but since they vary from -1 to +1, so we can adjust the range of this oscilloscope minus 1, sorry, -2 to +2. We see I okay. फिर इसको simulate करेंगे. Now we'll get better results. And you see, 4 different signals are being multiplexed. Okay, so one is sinusoidal, one is cosinusoidal, one is constant signal, like this we can simulate. So we have simulated a model which is multiplexing 4 different signals. So let me close it. Let me open a new diagram. So let us design one more system to generate square waves of different time periods. So we take this one square wave, another square wave, and 3 different square waves. Then I need one oscilloscope in sinks, okay, and I need one
clock pulses to give input at this point. So we have sources, so one clock for this one, another clock for this one clock for this one. So I'll make this time period 8. Okay, I made this time period as 4. Make this time period as 2. Okay, I'll connect this. इससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, इससे कर दिया, इसी से मैं second के now I need 3 input ports. So मैंने इसको block parameters में change करके we all write one more. कॉन्फ़िगर करेंगे 1 1. So make it 30 30 30. Now it became 3 ports. इसको एक एक करके हम कनेक्ट करेंगे. इस पहले जनरेटर के आउटपुट को इस फर्स्ट इनपुट से कनेक्ट कर दिया, सेकंड वाले को इससे कनेक्ट कर दिया, थर्ड वाले को इससे कनेक्ट कर दिया. तीन इस पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे. Go to simulation and format, line style and optimal, and we'll again select it, view, diagram to this. I will simulate this. Simulation is progress, and you see very easily we generated 3 kind of waveforms, square waveforms with time period 8, 4 and 2. So like this you can model, design, model and simulate different systems and simulate them very conveniently.